जो हमारा डिस्कशन है इट इज गोइंग टू बी ऑन मैच मेकिंग। शादी में जो हम मैच मेकिंग करते हैं उसके ऊपर वी आर गोइंग टू डिस्कस, और मंगल दोष के ऊपर जो है, मंगल दोष क्या होता है, क्या मतलब है उसका, क्या क्यों हमें मंगल दोष के देखना चाहिए शादी से पहले। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्रुति खन्ना, जो दिल्ली के वरिष्ठ मैं बोल सकता हूँ एस्ट्रोलॉजर है, और इनका ऑलमोस्ट 7 to 8 years का एक्सपीरियंस है, और शी हैज डन मेनी एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशंस, और दिल्ली में माने जाने सेलिब्रिटीज जो है उनके क्लाइंट्स हैं, और वो बहुत उनका जो एनालिसिस है, मैं उनके साथ काफी चार्ट्स में डिस्कस करता रहता हूँ, और काफी जो उनकी पकड़ है कुंडली में और स्पेशली जो हॉरोस्कोप मैचिंग को लेके ये बहुत ही कमाल की है, और मैं हमेशा उनसे कुछ नया सीखने को मिलता है मुझे। और आज जो हमारा पॉडकास्ट है, मैंने उनको स्पेशली इनवाइट किया है हमारे इस पॉडकास्ट के लिए कि आप आइए प्लीज हमारे को, और हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे सिविल एस्ट्रोलॉजी और हॉरोस्कोप चैनल के जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको थोड़ी सी जानकारी मिले, बिकॉज हॉरोस्कोप मैचिंग जो है वो अक्सर जो है वो उसको लेके देयर इज ऑलवेज डिलेमा कि हमें क्या वो करनी चाहिए, क्या उसका एप्लीकेशन आज के जमाने में भी है। अगर हम लव मैरिज में हैं तो क्या लव मैरिज कराना चाहते हैं तो क्या हॉरोस्कोप मैचिंग का रियली में कोई मतलब है, बिकॉज वी आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप। डज हॉरोस्कोप मैचिंग, इज इट एप्लीकेबल, डज इट रियली हेल्प अस इन एनी वे। सो इस सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए श्रुति जी इज गोइंग टू बी विद अस। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट दिस टाइम, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। so please if you could just enlighten us on this subject. Namaskar. See, first of all, matchmaking is something which is very important, and these days people go to pundits, and I should not say they are fake and all, but many pundits are not up to the mark. So the thing is, you have to go to a professional astrologer or a modern or a contemporary astrologer to do the exact compatibility analysis, not just the Gun Milan or the Ashtakut Milan, but apart from that, all the Navgrahas, all the compatibility, all the Navgrahas and the sun and moon sign and the Venus, Mars, Saturn, everything has to be taken into account. पहला क्वेश्चन आपको श्रुति जी है कि क्या आज के जमाने में जब हम वी आर टॉकिंग अबाउट अभी हमने चंद्रयान भेजा है, अपना लैंडिंग कराई है चंद्रमा के ऊपर, और आज के अब हम मून मिशन कर रहे हैं, सॉरी अपना मार्स मिशन के ऊपर हम काम कर रहे हैं। सो क्या हम जनरली लोगों का एक परसेप्शन रहता है, और ये लोग ये बोलते हैं कि अरे ये तो आजकल के जमाने, ये तो पुरानी बातें हैं। आपको लगता है कि आजकल के जमाने में हॉरोस्कोप मैचिंग इज एज इम्पोर्टेंट एज इट यूज्ड टू बी अर्लियर? See, it's very important. I would like to say that in older times, marriage was known to be a union of two minds, and was not just physical, mental, and emotional compatibility as it used to be. In older times, importance was given to the domain of the mind, but आजकल material domain को बहुत importance दी जाती है, which is success, well-being, prosperity, resources, and pleasures a male or a female should have. But आजकल के time में ऐसा है that the primary concerns have changed. बिल्कुल. So we have to look at the full horoscope matching with all the parameters. For example, जैसे आजकल लड़के लोग हैं, they will go for a female who is good looking, but not from the inner beauty, but the outer beauty. बिल्कुल बिल्कुल. And at the same time, a male would go for a female who's a female would go for a male who's rich, and not just the emotional compatibility and the mental compatibility would be seen. Females usually go for males who are rich. Right. And who are good, well educated and all that. Right. So these things have to be looked into account, and the most important thing is mental and emotional compatibility is to be seen, and not just that, the physical compatibility as well. Right. So basically, I fully agree with you that horoscope matching is more important today because we are living in a very materialistic world. So we're materialistic, and जो हम beauty, आपके बहुत अच्छा आपने बताया कि beauty जो है वो हम inner beauty को ignore करते हैं. We are only looking at the physical beauty, outside beauty, and money एस्पेक्ट कि भाई अच्छा आई वांट टू आई वांट अ पार्टनर जो मेरे को एक तरह से ये चीजें मुझे प्रोवाइड कर सकता है, तो फिर मैं जो है उससे एवरीथिंग या सो वी आर बिकमिंग वेरी अपॉर्चुनिस्ट लाइक इन अ रिलेशनशिप आल्सो. वी डोंट वैल्यू रिलेशनशिप्स, और जब तक वो हमें चीजें मिलती रहेंगी, जब तक आपको ब्यूटी अट्रैक्ट करती रहेगी, सो यू विल बी you will say that my relationship is good, and once your partner goes with age, definitely things change. Your external beauty is going to change. Then you say, oh, I don't have a connection with my partner anymore. So this happens in few years only. Many when you're young, you tend to be
energetic, beautiful and charming, attractive, but as you keep growing, suddenly you feel that age is catching on you. आप मेरे को एक बात बताइए कि आप जो कुंडली के ऊपर आपका इतना पकड़ है, तो आप क्या सिर्फ कुंडली मिलान के ऊपर जो आपका इतना पकड़ है, तो आप क्या गुण मिलान के ऊपर ज्यादा फोकस देते हो कि ओवरऑल कंपैटिबिलिटी में आप क्या चेक करते हो? See, गुण मिलान has to be seen to an extent only. Overall compatibility देखना बहुत important है आजकल के टाइम में, which most astrologers and pandit remove. They don't see it आजकल. It is very important. गुण मिलान is there to an extent. गुण मिलान में भी कुछ factors हैं which are more important than others, and some are okay in today's time, and some don't have to be seen as that much, and some can be compromised. मेरे को एक बात बताइए कि गुण मिलान के तो बहुत बढ़िया आपने बताया कि उसको जो है उसकी इट इज इम्पोर्टेंट, उसका एक महत्व होता है, लेकिन इट इज नॉट एवरीथिंग. तो बेसिकली आप क्या चेक करते हो जब आप हॉरोस्कोप मैचिंग में जाते हो? डू यू फोकस ऑन प्लैनेट्स? लाइक आई अंडरस्टैंड, आपके साथ बात हुई थी एक बार, यानी आपने बताया था कि हाउ इम्पोर्टेंट those planets are. For example, Jupiter, Venus, these are most important planets, and if you can just enlighten us, what is the role of planets that play when you're doing horoscope matching? Yeah, I'll give you an example. Like, we will look at Jupiter first. Jupiter is not only interested in relationships, like marriage in its purest form. Jupiter finds the whole idea of relationships hard to digest, first of all. Jupiter is the planet of liberation, and when working in its highest sense, it may disregard each and every type of relationship. Jupiter is the guru, so he is not interested in relationships. Jupiter believes in connecting to the higher existence. Okay, so Jupiter is not one who would be interested in relationships. Now we'll look at Venus. See, Venus is luxury, comforts, jewelry, food, and love. It believes that relationships and partnerships are based on mutual gains, respect, fairness, and shared responsibilities. But apart from that, Venus represents physical relationships and material pleasures. Hence, the planet is suitable for marriage, but the placement of each planet is equally important. Exactly. Venus किस sign में है, किस house में है, for the male and the female, that is very important. Now we'll look at Mercury. Mercury has no emotions. Mercury is the brain and the intellect. So it wants to learn and control everything and everyone. So it is not something which is related to marriage, but it has to be taken into account when communication is happening between the male and the female. Right. So now right. So if you don't connect properly, so yeah, if you don't connect properly, then the basis of the relationship is communication. Right. So that is the thing. So Mars may create problems like physical aggression. If Mars की energy बहुत ज़्यादा है, physical aggression, impulsive behavior, anger. I mean, sometimes people throw objects or like action में भी ज़्यादा हो जाते हैं, mental aggression हो जाता है, so that is the problem with the Mars problem. Impulsive behavior patterns is a very big problem which people with high Mangalic, or you should say high Mars energy, people face. Right. And if we see in terms of Mercury में mental aggression और mental torture ज़्यादा हो जाता है. किसी का बोलने की बहुत ज़्यादा आदत हो और बहुत ज़्यादा over the top जाके too much बोलने की आदत हो, वो भी सही नहीं होती. So these things have to be looked into account. और अगर आप Saturn की बात करिए तो Saturn is all duty, discipline, with no interest in emotions and enjoyments and sentiments. So right. Saturn can be a very dutiful partner. A person, or female or a male, can be a very dutiful partner. But if you see from the perspective of caring and loving, that Saturn can't give you. बिल्कुल, you are absolutely right, and I fully agree with you. Talking about Mars, मैंने खुद लोगों के साथ जो बात करता हूँ मैं, तो I have seen कि अगर स्पेशली अगर मार्स के साथ जैसे राहु की दृष्टि आ जाए या राहु बैठा हो, तो फिर तो जो आप बात कर रहे हैं ना कि लोग चीजें इधर उधर फेंकते हैं, मारपीट पे आते हैं, तो वो उनका जैसे होता है कि वो हाई लेवल, हाँ तो बहुत ज्यादा बिल्कुल बहुत खराब होता है उसके लिए. आई एम टॉकिंग अबाउट मार्स. मेरे को एक बताइए आप, हाउ इम्पोर्टेंट इज, जैसे हम अक्सर देखते हैं कि मंगल दोष के बारे में जो जब बात करी जाती है तो लोगों को एक तरह से डराया जाता है कि भाई आपके तो मंगलिक दोष है, आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है कि आपको लगता है कि मंगलिक दोष रियली में खराब है, या इसको बनाया जाता है ताकि हम लोगों को डरा के उनसे पैसे हटकाने की कोशिश करते हैं?